you have seen already. All these products belongs to NPCI, where NPCI is acting as a in between entity or interoperability of a bank. All the banks can be maintained by NPCI, and that is what where we come into the picture. I'll first basically every product you have seen right now is a chiller. There is a chiller which is an app. Then there is another solution which is an Aadhaar-based payment system, where you don't need to have password, you don't need to have any other devices. You just have to walk into the POS terminal, and you just have to punch in your fingerprint, and the transaction can go through. So all these payments, what does they provide? Basically, they provide a medium to transact a person from an electronic mode. So basically, now we have seen multiple use cases of it. Now I'll show you two products basically which we want to showcase to you. One is a star 99 hash product which works on a normal GSM handset which doesn't have internet, whether it have internet, whether it don't have internet. If it's a GSM connectivity phone, you can transact through that as well. Now then again, coming next to the UPI part, UPI is basically something similar to application where you just add your account and transact through it. So both of the products I'll not take much of your time, but I'll display how this is going to be a game changer in the electronic payments today. There is a small video where star 99 hash is there. मोबाइल का इस्तेमाल केवल फोन करने और मैसेज भेजने के लिए किया जाता है। और आप अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल मोबाइल बैंकिंग समेत अनेक सेवाओं के लिए कर सकते हैं। लेकिन भारत में लाखों लोगों को ये मालूम नहीं है। उनका क्या? वो अपने फोन में मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? बस एक आसान नंबर की मदद से *99#। अब प्रत्येक व्यक्ति अपने मोबाइल हैंडसेट में इस नंबर के इस्तेमाल से बैंकिंग सेवाएं प्राप्त कर सकता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। *99# की मदद से प्रत्येक मोबाइल बैंकिंग रजिस्टर्ड उपभोक्ता सभी बैंकों के लिए एक ही नंबर जोड़कर बैंकिंग सेवाएं प्राप्त कर सकता है। *99# इंटरनेट के बगैर भी काम करता है और उसका इस्तेमाल किसी भी GSM मोबाइल हैंडसेट से किया जा सकता है, चाहे वो स्मार्टफोन हो या ना। देश के किसी भी कोने में से वित्तीय, अवित्तीय एवं वैल्यू एडेड सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं *99# जोड़कर। इतना ही नहीं, *99# सेवा 12 भाषाओं में उपलब्ध है और उसका 24 घंटे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इस सेवा का इस्तेमाल करने के लिए कोई रोमिंग चार्जेस भी नहीं है। शुरुआत करने के हेतु आपको केवल अपना मोबाइल नंबर मोबाइल बैंकिंग सेवाओं के लिए अपने बैंक के साथ रजिस्टर करना है। एक बार रजिस्टर हो जाने के बाद आप अपने मोबाइल में से *99# टाइप करके वेलकम स्क्रीन पर जा सकते हैं। एक बार वेलकम स्क्रीन पर पहुंचने के बाद बैंक मेन्यू में जाने के लिए या तो 3 अक्षर का बैंक का संक्षिप्त नाम या आपके बैंक के IFSC कोड के प्रथम 4 अक्षर लिखें। IFSC आपके चेकबुक या पासबुक में लिखा होता है। बैंक का संक्षिप्त नाम NPCI की वेबसाइट एवं IMPS के सोशल मीडिया पेजेस पर लिखा होता है। अब आप दिखाए गए नंबर को चुनकर मेन्यू में सूचीबद्ध किसी भी अवित्तीय, वित्तीय या वैल्यू एडेड सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। अवित्तीय सेवाओं का इस्तेमाल करके आप अपने खाते में जमा राशि की जांच कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट प्राप्त कर सकते हैं, एम-पिन प्राप्त कर सकते हैं या उसे बदल सकते हैं, NOI देख सकते हैं और OTP प्राप्त कर सकते हैं। बस एक बटन दबाकर आपको केवल इतना करना है, अपना पसंदीदा विकल्प चुनें और अवित्तीय पूछताछ करें। *99# की मदद से आप इंस्टेंट मनी ट्रांसफर जैसी वित्तीय सेवाएं भी प्राप्त कर सकते हैं। अब आप जिनको पैसे भेजने हैं उनके IFSC और अकाउंट नंबर या MMID एवं मोबाइल नंबर या आधार नंबर का इस्तेमाल करके पैसे भेज सकते हैं। जिनको पैसे भेजने हैं उनका IFSC एवं अकाउंट नंबर का इस्तेमाल करके पैसे भेजने के लिए विकल्प चुनें, IFSC का इस्तेमाल करके पैसे भेजें। उनका IFSC नंबर लिखें, एक स्पेस छोड़ें और फिर अकाउंट नंबर लिखें। उसके बाद राशि लिखें और एक स्पेस छोड़कर टिप्पणी लिखें जो वैकल्पिक है। एम-पिन का इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन प्रमाणित करें।
एक बार ट्रांजैक्शन पूर्ण हो जाने के बाद आपको और लाभार्थी को अपने अपने बैंक से एक ट्रांजैक्शन की पुष्टि करते हुए एक मैसेज मिलेगा। इसी प्रकार आप लाभार्थी के MMID एवं मोबाइल नंबर या आधार नंबर का इस्तेमाल करके भी पैसे भेज सकते हैं। इन सेवाओं के अलावा *9 की ओर से एक और मूल्यवर्धित सेवा भी उपलब्ध है, जिससे उपयोगकर्ता बैंक के साथ अपने आधार सीधे या लिंकिंग स्थिति की भी जांच कर सकता है। आपके मोबाइल फोन में से *9*9# टाइप करके भी ये सेवा प्राप्त की जा सकती है। बात यहाँ पर खत्म नहीं होती, आप केवल बैंक का निश्चित कोड डायल करके भी आपके बैंक मेन्यू तक पहुँच सकते हैं। बैंक कोड्स की सूची NPCI की वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है या इसके लिए आप अपने बैंक की नजदीकी शाखा को भी संपर्क कर सकते हैं। अब आपको पता चला कि किसी भी फोन से मोबाइल बैंकिंग सेवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको सिर्फ इतना करना है, मोबाइल बैंकिंग सेवाओं के लिए आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाएं। ट्रांजैक्शन करते वक्त आवश्यक जानकारी जैसे कि लाभार्थी का IFSC, खाता संख्या, MMID, मोबाइल नंबर इत्यादि अपने पास रखें। *9*9# मोबाइल बैंकिंग को लाए आम आदमी के द्वार। जैसा कि आपने देखा कि ये जो सर्विस है, दिस इज ऑल फॉर अ नॉर्मल पर्सन हु डोंट हैव अ स्मार्टफोन, जिनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है या जिनके पास है उनके पास भी एक ऑप्शन है ये पे करने का। सो बेसिकली इफ यू आर एलिजिबल फॉर मोबाइल बैंक रजिस्ट्रेशन, यू कैन ट्रांजैक्ट थ्रू these मोड्स। और ये छोटे पेमेंट्स जैसे 5000 तक के पेमेंट्स आप इससे एक दिन में कर सकते हैं। अभी मेरे प्रश्न है यहाँ पे, हाउ मेनी पीपल हु आर देयर इन दिस फोरम डज हैव अ मोबाइल? कैन यू जस्ट रेज योर हैंड्स, राइट? सो आपके पास कितने लोगों के पास इसमें से स्मार्टफोन है जो आजकल एंड्रॉइड्स और एप्पल, एवरीबॉडी। So this product was basically जो *99# है, अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं तो आप आगे जाके किसी को बता सकते हैं। तो those people who doesn't have a smartphone like you or somebody else in the environment, and then those people just have to register their number and they can transact. Now the next product which we want to display is a UPI, which will be applicable to all if you have smartphones. So basically in that also I'll show you a presentation, or we can say a EV like saying like this. You just have to try it, and how you need to do go ahead with that process. I'll just let you know in this next AV. यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां आप हर तरह का भुगतान ऑनलाइन कर सकते हैं, चाहे वो आपका बिजली पानी का बिल हो, कॉलेज की फीस हो, घर का किराया हो या पेमेंट रिक्वेस्ट। UPI से अब हर तरह का भुगतान होगा, और वो भी तुरंत और सरल। साल के 365 दिन 24 घंटे आप UPI की सुविधा किसी भी सुविधा प्रदान करने वाली बैंक के ऐप्स पर यूज कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। और सवाल है कि UPI है क्या? क्या ये एक बैंक ऑनलाइन अकाउंट है या IMPS के तरह की कोई सर्विस या जॉब? असल में यह सब कुछ का समावेश है एक ही ऐप के अंदर। UPI की सुविधा से आप अपने बैंक अकाउंट को अपने पहचान ID से लिंक कर सकते हैं, यानी कि अब आपको अपना खाता धारक का नाम, लंबे अकाउंट नंबर या IFSC कोड याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक मनपसंद पहचान ID का चुनाव करें और बैंकिंग का एक सरल तरीका अपनाएं। और UPI इतना खास क्यों है? तो शुरुआत करते हैं पैसे भेजने के तरीके से। UPI का इस्तेमाल आप किसी को भी पैसे भेजने के लिए कर सकते हैं, सिर्फ एक बटन दबाकर। इतना ही नहीं, UPI आपको मनी कलेक्ट करने की भी सुविधा देता है, मतलब पैसे का भुगतान हो या पैसे लेना। UPI आपको दोनों की सुविधा देता है पहचान ID के उपयोग से। दुकानदार भी इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बस अपने शेड्यूल्ड बिल के बारे में पूछना है और बिल शेयर करना है। और सबसे जरूरी बात, आपकी सारी पेमेंट्स होंगी QR कोड की स्कैनिंग के बाद। चाहे दुकान हो, होटल हो या पेट्रोल पंप, UPI से आप अपने भुगतान कर सकते हैं तुरंत। पर क्या UPI सही में इतना सुरक्षित है?
जी हाँ, यूपीआई के लेन देन में इस्तेमाल होते हैं सिंगल क्लिक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जो आपके यूपीआई पिन या मोबाइल सिम के प्रमाणीकरण के बगैर चल ही नहीं सकता। बिल्कुल एक सुरक्षित बैंकिंग लेन देन की तरह। तो देर किस बात की, जल्दी से अपनी पसंद का बैंकिंग ऐप डाउनलोड करें, अपने पहचान आईडी का चुनाव करें और अपने पैसे का लेन देन और भी आसान बनाएं। और हाँ, अपने सब्जी वाले या रिक्शा वाले की भी मदद करें, क्योंकि आखिर इंसान ही इंसान के काम आता है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस powered by NPCI and member banks. थैंक यू एवरीवन। इसमें यूपीआई आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो, मैं कुछ स्टेप्स हैं, सिंपल स्टेप्स हैं जो आपको वीडियो के थ्रू दिखाऊंगा। You can download using Android Google Play Store. So first I'll show you how you want to go on a Play Store and how you can download any of the UPI enabled app. This screen is a Google Play Store. जो आपके साथ जिनके पास भी Android phones हैं, they can just click on Play Store and they have to just type in UPI on a search button. So as soon as you type, you get all the banks which is listed with UPI enabled service on their market. It will be appear on the Play Store. You just have to download your app, install it. And download it. As soon as you download it, you just have to click on open. Then this app will ask you that there is a SMS which is going outward from this device. जहाँ पे आपने ऐप इंस्टॉल किया वहाँ से एक SMS जाएगा जो कि कस्टमर के मोबाइल से जाएगा, कस्टमर को उसके लिए क्लिक करना है बस। If you have dual SIM, आपको दोनों SIM से ऑप्शन आएंगे। आपका वही SIM से SMS जाना चाहिए which is registered with your bank. On successful SMS delivered, you'll get another option where you have to create a profile with that app. जैसे आप वॉलेट में करते हो अपना प्रोफाइल बनाते हो, उसी तरह यहाँ पे भी आपको एक अकाउंट और प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, जिसमें आपको कुछ डिटेल डालनी होगी, नाम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पासवर्ड डालना होगा आपको, और पासवर्ड डालना आपके एप्लीकेशन का, व्हाटएवर एप्लीकेशन पासवर्ड यू हैव, and accept करना पड़ेगा आपको terms and conditions which are there given by the banks for using this app. As soon as you confirm on registration, it will say that you are eligible for the transaction through UPI. This was the first part जहाँ पे आपको how to download the app we have told you. Now we will let you know that how whenever you download the app, after that what you need to do for adding your account into that app. So this transaction will not act as a wallet जहाँ पे आप अपना account पहले डेबिट करते हो, फिर wallet में पैसे आते हैं, and then you try to use this wallet amount. Here it will be directly from your account. So again, so the app which I have downloaded, उसमें I am just going back to it. I'll punch in my password which I have set earlier. So as soon as I open my application, आप यहाँ पे देख सकते हो there is an option called add a bank account. So I will just click on that add a bank account. All the list of banks which are available on UPI will be given over here, where you can see whatever bank account or bank which you are banking with,
you can just click on that bank. If you can see, I am just adding my ICICI bank account which is there. So I'll just click on ICICI. And based on mobile number, it will identify that what are the accounts I have in ICICI. I have 2 accounts in ICICI, so I have added 1. It says that your account has been added successfully, and you have to create a virtual address for that account, which means जब भी next time I am going to pay somebody with the amount, I'll use this virtual payment address, or you can say unique ID. So next time I don't need anybody's account number, IFSC. I just have to know this person's virtual address. I can do send money also, I can ask him money also. So both of the method where you have to pay or whether you have to ask money from somebody, you can use this method only. So this is how I added my account in a PNB app where I have added my ICICI account. And the beauty of these apps are that whatever app you use, you have to have you can add multiple accounts to it. You can add any other bank account also to it. As you see in the example, I have downloaded my PNB app, which I like the most, and I added my ICICI account into it. So I don't need to have multiple accounts or multiple, and if I have multiple accounts, I don't need to have multiple apps for me. I just have to have a single app for myself. Next process, I'll tell you how set MPIN or MPIN generation can be done over here. So if you can see, I just click on set MPIN. I enter my debit card details, which is last 6 digits of debit card, and expiry date. I receive an SMS from my bank, which I have added. I have added my ICICI access also. So I receive a SMS from bank saying that this is your OTP, and this is enter your MPIN. This is the first time when I am entering or deciding what my PIN is going to be. It might be 4 digit, or it might be 6 digit, depending on banks. So the OTP I have received, you can see over, I have received an OTP. I just punch in that OTP over here and the PIN which I want to set. I read out the OTP. Go back to the option, enter my desired PIN, enter the OTP which I have received from my bank, and then click on OK. So basically this is how you can see I have generated my PIN as well so easily on this app. We'll try to show you a transaction also, whether basically meanwhile I'll invite Mr. Adarsh also. He's a friend of mine. I have met him last time. So meanwhile I'll arrange for the demo. I just want him to speak about UPI where he has been using it from last I think 1 or 2 months, and he did few transactions. Maybe you can connect with him for any kind of query or any kind of issues if you face. Introduce yourself as a judge. Tell your experience how it is. It was for him. Thank you, Anurag. So I am C. Adarsh Vadreja, member of IT committee at CDC. So as a part of IT committee, I like to try out new features. So when the UPI was launched, I tried out the very next day. I called up my friend and said, "Oh, you have which bank account? Come fast. I need to create a UPI virtual address." And then I transferred 10 rupees and we both were excited. Wow, that's the speed that we are talking about. This is the thing that will give boost to the Indian economy. Or if I say in my grandfather words, ये चीज इंडिया को फिर से सोने की चिड़िया बनाएगा. That's the thing. So just 3 days back, I was called for giving a seminar. And we had a seminar in our Jain community, Marathi, Gujarati Jain community, where the traders are not even, the shopkeepers are not even 10th or 12th pass. And I was asked them to educate them to transact using a UPI. So
And any idea how it went? It went really awesome. It was so simple. I gave them an option to download any of the app, and then we had a live demonstration. So all of you must definitely give a try out UPI. And in EY, I am working currently with EY. So in EY, whenever we have a party and we want to transfer any fund, we are all using UPI now. Thank you. So, आपको जब भी कोई भी payments करना हो, you may use, if you have smartphones, you can use UPI. If you don't have smartphone, you can use at least a payment mechanism or whole and sole idea is of NPCI. But each and every payment has to be electronic in nature, which will save every one of us one day definitely. So, thank you from NPCI and if you have any queries, we are open for it. Okay, so now time for questions. We had earlier thought that we will first ask some questions on our own. So I will be asking questions. But looking at the enthusiasm, what do you say? You want to start asking questions first? Yeah. Yes? Okay. So I'll ask everybody to please come on the dais. All the people were going to answer. Yes, they have to answer. So people from HDFC, Oxygen, and these guys, please come here. The whole team. Okay. So everybody is here. Please continue asking questions. Please, we have a mic. Nowadays there are many mobile apps are there. Freecharge, MobiWeek or Paytm, ICICI recently introduced these pockets. So you are showing two apps. One is the PayZip and another was that Chiller. Yeah. So how this PayZip is as compared to the Paytm and other MobiWeek or something like a prepaid wallet, how it is more convenient. And also how Chiller is you can compare with this ICICI pocket because this HDFC and ICICI both are the banks. Others are not a bank. So we are interested in going to which bank and which app is more convenient to the customer. So first of all, I would like to see these pockets of ICICI and your Chiller. Can you do a little comparison and how much you are charging the service tax while we are applying these apps? Okay. Basically, you cannot compare Chiller with Pocket because Pocket is a wallet and Chiller is a payment system, account to account. So you can compare a Pocket to a PayZap. Now, not taking any bank, but if I just compare wallets across the industry and PayZap today, the unique feature about PayZap is first, it also has a wallet. Yes, everybody is a wallet, but this also has a wallet. You can also link your debit as well as credit card into it, which no wallet is giving you a facility. All the wallets will allow you to top up your wallet to a debit card or a credit card. It will not allow you to link the card directly. That is one. Second is one-click exit. Now, one-click exit means what? If you are going into, say, for example, a Flipkart, for example. Just for an example, so say, if you are going to a Flipkart, you have purchased, say, a pen. When you come to payment option, you will have a net banking, you will have now UPI which is there, you will have a pocket, you will have a PayZap. Okay. You have a Paytm, for example. Just as an example, the advantage with a PayZap is if you are making a payment through HDFC card, you don't have to enter any card details onto the site. You just have to enter your PIN number and exit. Otherwise, if I am using a card on a net banking or a credit card, I will have to enter the card number, I have to enter the CVV, expiry date and all those. Here you don't have to enter anything. That means
All your card details are saved with the bank and nowhere it gets stored digitally merchant side. And the third is this also gives you an online shopping facility. Where perhaps if I compare with the Pocket doesn't give you an online shopping facility. So you can book your tickets, you can book your movie tickets, you can go to Book My Show, and everywhere you get a discount. So that's how Pocket is different. Sorry, your PayZapp is different against a Pocket or a Paytm. What would be the transaction charges? See,